Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I am back again with a video on Monday motivation, and today's video is going to be really helpful for many of the students who really struggle to write perfect answers in theory exams. And writing answers is actually one of the most important, I would say, thing that actually helps you clear the exams. बहुत सारे बच्चे इसे बहुत lightly लेते हैं that presentation ही तो है, but presentation can make a difference, right? When you know the answer and your presentation is also bang on, that is the time when you can actually score very good marks, right? तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि थ्योरी के एग्जाम में आंसर्स आपको कैसे लिखने चाहिए. Before that, if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. So I will start with the first tip जो मैं अपने personal experience से आपको देना चाहती हूँ, especially for theory exam, which is think and then write. I have experienced it myself that many of the times what we do, we read the question and we start writing. जैसे question देखा बस लिखना शुरू कर दिया. We don't pause and think that what are we going to write. And after we are finished with writing, we realize that we have actually created a mess in the answer और हमें खुद ही नहीं पता चलता कि आंसर मतलब किस तरीके से हमने इसे आंसर कर दिया, राइट? कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में ही कहीं चले गए हैं. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन थ्योरी एग्जाम्स एंड आई हैव फेस्ड इट माई सेल्फ एंड देन आई यूज टू रिग्रेट दैट ओ अब इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब दोबारा तो मैं इसे लिखूंगी नहीं. सो इन एवरी थ्योरी एग्जाम थिंक एंड राइट. ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, भले ही 2 मिनट ले लो, जस्ट 2 minutes. Trust me, these 2 minutes can change the presentation game of your exam. Second tip that I give almost in my all presentation sessions, which is make appropriate paragraphs. So, what do you mean by appropriate paragraphs? Now, I can't say that two paragraphs are enough or three paragraphs are enough. It is completely dependent on the subject. It is completely dependent on the way you are writing, the way you are presenting, but never ever answer in one long paragraphs. This is also something I have learned through my experience. Never do that. Never write in one running or continuing paragraph. It is the biggest mistake you do because it takes away the gist of the answer. क्या लिखा है, कैसे लिखा है, important टॉपिक्स कहाँ गए एंड स्टार्ट कहाँ से था, कंक्लूजन कहाँ पे है, कुछ भी नहीं मिलता एंड द पेपर डज नॉट लुक प्रोफेशनल इनफ. तो जितने भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आपको लगता है, आप पैरा चेंज करो. पैराग्राफ्स बनाने से बहुत क्लैरिटी आती है. थ्योरी का जो पेपर है, बिकॉज इट इज लाइक थ्योरी, यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स. तो आप अगर उसे तरीके से लिखोगे तो इट विल रियली enhance your presentation, right? Third important thing is highlight your important points. Now I have heard this from students कि हमने सब कुछ लिख दिया है, the examiner will find it. Of course the examiner will find it, it is their duty. But don't you feel if you will highlight them, it will be easier for them to find it out, right? बस इतनी चीज सोचो कि अगर आप ही अपने important topics को highlight कर दोगे तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि एग्जामिनर से भी वो छूट जाए, राइट? तो एक चीज हमेशा याद रखो in your mind that when you are presenting your answer, you should leave no stone unturned कि आपकी तरफ से कोई कमी रह जाए. पेपर ऐसा होना चाहिए that examiner is compelled to give you marks, right? So this is how any important topic, any important point, any important section number, rule name, rule number, or anything else you feel is important, always highlight them. And by highlighting, I don't mean write it with a different pen or decorate it. No, just a simple
underline is also a highlight. Highlight means that when examiner checks your paper, it should be very much apparent on the paper that he should easily look on the paper and find out that this is important, and he will grant you marks. So use this trick. It will really, really help you fetch more marks in your exams. The fourth point is know the format of your answer. So what happens, I want to tell you this, that every institute has a certain kind of patterns or formats that could be checked from, like guideline answers, suggested answers, MTPs, RTPs, depending on your institute. Whatever kind of answers the institute releases, always pay attention to those things and use those formats in exams. बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज में लगे हुए हैं कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, हमारा कंटेंट फिनिश हो जाए, but the main point is how are you presenting it. Always check the answers that are always delivered by your institute, the formats they use. जैसे कि CS में मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, जहां पे भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है वो हमेशा पॉइंट्स में आंसर होता है, जहां पे भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है वो हमेशा टैब्यूलर फॉर्मेट में आंसर होता है. तो ये सारी चीजें आप CA CS CM में जिस भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, फाइंड आउट करो, फॉर्मेट फाइंड आउट करो. अपने आंसर का फॉर्मेट ढूंढना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस फॉर्मेट को ढूंढो और उसे एप्लीकेबल करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूट है वो आपको एक सैंपल देती है, वो चाहे गाइडलाइन आंसर्स की तरह हो, MTPs हो, RTPs हो, बट यू डोंट पे अटेंशन टू द फॉर्मेट. आप बस कंटेंट देख के चले जाते हो, आंसर ठीक है, वेरी गुड, कंटेंट इज किंग, आई अग्री, बट फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर्मेट पे जरूर ध्यान दो. इस बार जब रिविजन करोगे तो इस चीज का भी ध्यान देना कि आपका इंस्टीट्यूट किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करता है, कौन सा फॉर्मेट यूज करता है, एंड यूज द सेम इन योर एग्जाम्स, एंड यू विल सी हाउ मच डिफरेंस इट विल create in the marks that you fetch in the exams, right? And moving to the last tip that will actually help you answer in the best way possible in the theory exams, that is practice द क्वेश्चंस. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं स्कैनर से, पास्ट ईयर क्वेश्चन से, बट व्हाट दे डोंट डू इज मैच देम with guideline answers or MTPs or RTPs or suggested answer, whatever your institute is releasing, depending upon CA, CS, and CMA, always match them. Many students this time DM me that we had written correct answers but we scored so less. उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बच्चे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर जाते हैं लेकिन वो कभी भी प्रेजेंटेशन को मैच नहीं करते गाइडलाइन आंसर से. कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि गाइडलाइन आंसर्स में कितने पैराग्राफ्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है. ये नहीं देखते कि गाइडलाइन आंसर्स में पॉइंट्स में दिया है या पैराग्राफ्स में दिया है. All these things are very very important to be पे अटेंशन टू. ये ऐसी चीजें नहीं है दैट ठीक है बस आंसर देख लिया दैट इज इनफ. दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द आंसर्स इन CA CS एंड CM में. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगे हो, एंड ट्रस्ट मी, if you will follow these points, your presentation will definitely amp up, and when your content is right, your answer writing skill is right, there are higher and higher chances that you get good marks, you get the marks that you actually deserve for the content you have written. So follow them to get good marks in theory exams in the upcoming attempts. And all the best from my side. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. Do follow me on my Instagram as well. My Instagram handle is CS Jaspreet Dhanjal, and I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.